बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? Today we are going to start C++ programs in IDE environment. As I told you in the class that IDE environment facilitate a user to write programs because it gives you syntax highlighting, it gives you point of errors, it compiles the program easily and it executes the program efficiently. ठीक है, आईडी एनवायरनमेंट क्या होता है? जो सिंटेक्स आपको होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के, उसको इजीली इंडिकेट करता है, खुद से भी राइट कर देता है, आपको ऑप्शंस दे देता है उसमें से चूज करने के लिए। कंपाइलेशन डिबगिंग इज कंपैरेटिवली इजी इन आईडी एनवायरनमेंट. Today I'll show you some programs of C++ which I have already made. See, this is dev C++ environment, and I'm going to open different files, different programs of C++, like this one, first one. See, this is the first program. You must know the formatting of this program. This is the multiplication program in which we have taken two variables, that is integer a, b, and multi. Multi is for multiplication operation. We have taken c in is for input and c in b, like a and b are the variables which are taken as input, and we will multiply these in the third variable multi, and C out we are giving the answer in which is stored in multi. ठीक है, these are the preprocessor directives. Hashtag include IOStream using namespace std and integer main. These are the preprocessor directives. You already know about it. Uh, now I'm going to compile it and run it for you. This is the easiest program from your book. First, there is a shortcut key F9 for compilation, and for run we are using F10, and for compile and run we are using F11. Now first I need to compile this program. See, there are mistakes. There must be some mistakes. See, what is the mistake? I have to write using here. Using namespace std. Using was missing here. That's why it gives you error. Now I compile it again. Compilation is going on. It may take some time to execute again. There are some backup files are opening. I'm going to open the other one. See, even odd. See, this is the program of to find out even and odd numbers. Preprocessor directives, hashtag include IOStream using namespace std integer main. Now we are taking one number as an input. The variable is number. C out, enter any number, C in number. Now we'll provide the condition. If number is number, we are going to use mod operator here. If the number is divisible by 2 and the result would be 0, that would be even number, as it is odd number. Now we are going to compile it. See, there is no errors, no warnings, and this is the output file name. Now you can run this program. Give any number. It gives you the instruction to enter any number. It's 24. See, the number is even, right? Now I'm going to run it again. 33. The number is odd. So it can identify that whether the input is odd or even. You know about modulus operator. Modulus operators indicates the remainder. ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को जिसे हमने इनपुट लिया है 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ऑब्वियसली जब भी आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि वो इवन नंबर है. ठीक है, keep in mind I am using double equal to. This is the equal to sign. I am not using assignment operator. I am using equal to operator, which is double equal to. So mod operator, equal to operator, both are, mod operator is the arithmetic operator and equal to operator is the assignment operator.
Now see out the number is even, else the number is odd. Now I'm going to open one more file. See this one, the second program. Preprocessor directives, integer main, see out enter any number. Now I am giving a number input. If the number is divided by 5 and the remainder is 0, remainder is equal to 0. Now again I am using modulus operator here. The number is divisible by 5, else the number is not divisible by 5. Now run it. See, enter any number. I have given 44 as input. The number is not divisible by 5. Okay. And if I'm giving you another example, run, giving input as 45, it is divisible by 5, right? If I'm going to remove this line, C out, I'm going to remove this one. C out, delete, right? Now compile. No error, no warnings, run. There is only a cursor blinking. There is no instruction whether to input any number, enter any number. There is no instructions, right? You have to give just input 45. The number is divisible by 5. So the first line given, C out, enter any number, executes as it is in output. ठीक है, जो आप सी आउट के साथ कोटेशन मार्क्स में देते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले स्क्रीन पर आता है, इसलिए हमेशा सी आउट में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या आउटपुट दिया जाता है। और अगर हम कोई प्रोसेसिंग का आउटपुट देंगे तो फिर हम वो कोटेशन मार्क में नहीं देते, बल्कि हम वो सिर्फ उसका वेरिएबल दे रहे होते हैं, right? Now I'm going to open one more file. See this one. Now, what is the program about? Preprocessor directives, as usual, integer number, enter any number. We have to enter any number. If number is greater than 0, now the condition applies here. If the number is greater than 0, what would be the output? The number is positive. Else, if it is nested if else, right? Else, if the number is less than 0, the number is negative. Else, the number is 0. Now run this program. 23. The number is positive. Now run it again. Minus 56. The number is negative. Now run it again. The number is 0. तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तीनों कंडीशंस एग्जीक्यूट हो गई इजीली इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो C++ में कंडीशन लगाना, अब यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज नॉट गिवन हियर। Why we have given statement terminator? जब हमारे पास, जब हम कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं तो हमारे पास जब बात कंप्लीट हो जाती है, वी यूज टू गिव फुल स्टॉप, यानी यहाँ बात कंप्लीट हो गई है। सो स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स कि यहाँ बात कंप्लीट हो गई है, यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, राइट? जब स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ, इफ के कंडीशन में अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट, कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाए, तो इसका मतलब है कि बात कंप्लीट नहीं हुई। तो जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक सेमीकोलन नहीं लगेगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगेगा। अगेन एल्स के साथ बात फिर इनकम्प्लीट है। एल्स इफ यानी वरना, अगर नंबर इज लेस देन 0, अगर छोटा हो 0 से, द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहाँ लगाने हैं, कहाँ यूज करने हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर व्हिच मींस स्टेटमेंट एंड्स हियर, राइट? नाउ आई एम ओपनिंग वन मोर प्रोग्राम हियर, score. Now there is a program in which we are going to give 3 inputs, 3 numbers, or you can say marks of 3 subjects, and we will give the condition that
if the numbers are greater than 50 in all three subjects, it would be considered as pass, else fail, or you need improvement, right? So this program tells you about it. See. Now, what question I have given? We are going to give three inputs. Input 1, 2, 3, or you can say score 1, score 2, and score 3. Three inputs. We'll check whether we are gaining greater than 50 in each subject और लेस देन 50 इनपुट हम कंसिडर करेंगे अगर एक भी सब्जेक्ट में स्कोर लेस देन 50 हो दैट मींस योर रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग और यू नीड इम्प्रूवमेंट if scores of all three subjects are greater than 50 means your result is good. So the question is you need to input three numbers, check the condition whether you are having greater than 50 marks or less than 50 mark. Now, first of all, compile this program. See, there is no errors, no warnings. Now I'm going to run this program. C program output needs some time to load or to execute. So wait patiently. Enter first number. Assume that I'm giving 56. The second 78 and third would be 77. Your result is good. Now check the other condition as well. See. First input 77. Second input I am giving 45. And third input is 80. The result is disappointing. See, we have given the condition on all three subjects, right? First, 77 is a good score. Third, 80 is a good score. But second is 45, and we have given the condition that score 1 is greater than 50 and operator. Score 2 is greater than 50, again and operator. Score 3 greater than 50. Three of the condition must be true. And operator, I told you in the class that and operator in which all the condition must be true. अगर तीन conditions हैं तो तीनों true होनी चाहिए और अगर दो कंडीशंस हैं तो दोनों ट्रू होनी चाहिए दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा अदरवाइज एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो कंडीशन आउटपुट फॉल्स होगा ठीक है अगर इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई लाइक आई हैव गिवन स्कोर 170 इट स्कोर 380 बट स्कोर 2 वाज 45 दैट्स व्हाई द रिजल्ट वाज योर रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हमने कंडीशन यही दी है कि तीनों में अबव 50 होना चाहिए ठीक है अब यहां पर अगर मैं और ऑपरेटर लगा दूं ठीक है यहां पर मैं और ऑपरेटर लगा देती हूँ इंस्टेड ऑफ एंड now I'm going to compile it again whenever you have some changes compile the program again error 0 warning 0 now run it enter first score 45 77 80 your result is good see because I have given और ऑपरेटर यहाँ मैंने और ऑपरेटर लगा दिया और ऑपरेटर क्या कहता है हमसे और ऑपरेटर सेज दैट इफ वन कंडीशन इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा योर रिजल्ट इज गुड रन करते हैं इसको अगेन अब हम जो इनपुट देंगे वो हम तीनों रॉन्ग इनपुट देंगे लाइक लेस देन 50 देंगे अब क्या रिजल्ट आ रहा है योर रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तीनों कंडीशंस फॉल्स हो गई इसलिए रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आ रहा है अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती तो इसका मतलब है कि योर रिजल्ट इज गुड आता अब एक कंडीशन देते हैं हम 70 45 32 see your result is good although the numbers are less than 50 but
आई हैव गिवन और ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और दोनों इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ आ जानी चाहिए कि एंड ऑपरेटर का पर्पस क्या है, जब सारी कंडीशंस ट्रू हो। और ऑपरेटर का पर्पस क्या है, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो तब भी आंसर ट्रू में ही आता है, ठीक है। I have given you four programs. First one is even odd numbers, in which modulus operator and equal to operator is used. Again, divisible by 5, modulus operator and equal to operator. Here is the conditional program by using if and else nested if. ठीक है, नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है कि इफ की मल्टीपल कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है बल्कि मल्टीपल कंडीशंस हैं। फोर्थ प्रोग्राम में इफ की एक कंडीशन है सिर्फ, लेकिन एक ही कंडीशन में तीनों चीजें हमने बता दी हैं, तीनों इनपुट्स का क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसका। लेट्स ओपन वन मोर प्रोग्राम। See this one. Now, what is the criteria? First, understand the problem. First, understand the problem given to you. I'm saying that I have to give a number as an input, temperature. ठीक है, टेम्परेचर मैं दे रही हूँ। टेम्परेचर का क्राइटेरिया है, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, it indicates it's very hot weather. If the temperature is greater than or equal to 20, it's warm outside. Else, temperature less than or equal to 10, it's cool weather outside. So the criteria is temperature greater than 40, temperature greater than 20, and temperature less than 10. ठीक है, so I need to take a variable that is temperature for temperature. Now I need to give the instruction enter temperature, input temperature, and given the condition if the temperature is greater than 40, the print is it's very hot weather, else varna. If temperature is greater than or equal to 20, the result will be it's warm outside. Else, if again nested if, bar if की condition है. Compile the program. See, there is no error, no warnings, and run. Now I'm going to give the temperature. Now, let's take 32. It's warm outside because I have given that criteria that above 20, it's warm, right? Now, let's take it again. Temperature 40, it's very hot weather. So these are the if else condition. Nested if, I'm explaining today nested if, only if condition, and modulus operator, equal to operator, and the environment of C++ programs, that how the screen looks like, how the output displays, output किस तरह से आप एक लाइन अगर लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन की लाइन कैसे डिस्प्ले होती है, एंड एक्सप्लेनेशन की लाइन अगर आप नहीं लिखते तो कैसे आउटपुट डिस्प्ले होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर की हैं। एरर्स एरिया इज दिस वन, यहाँ कंपाइलेशन होती है और यहाँ आपके एरर्स शो होते हैं अगर आपके एरर्स हैं। चले इस प्रोग्राम में कुछ एरर डाल के एक देख लेते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर सी आउट के साथ लेस देन के साइन जो उसका सिंटेक्स है वो नहीं दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। सी, अब ये आईडी एनवायरनमेंट की फैसिलिटी है कि उसने उसी लाइन को इंडिकेट कर दिया है और यहाँ पर एरर दे दिया है। एरर एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था और जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको उस लाइन पे समझ लेना चाहिए, और अगर उस लाइन पर एरर नहीं है तो या तो उसके ऊपर वाली लाइन पे होगा या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में होगा, वहां कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई सेमीकोलन मिसिंग होगा, इंटीजर मेन नहीं दिया होगा आपने, ये सारी चीजें एरर्स में हो सकती हैं। अब हम इस पे दोबारा जो हमारा एरर था उसको हम रिमूव कर देते हैं और कंपाइल करते हैं इसे दोबारा। देखिए अब एरर नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर मैं सेमीकोलन हटा देती हूँ।
से लाइन कौन सी डिस्प्ले हो रही है, जिस लाइन में एरर है। ठीक है, तो ये आईडी इन्वायरमेंट की फैसिलिटी है जो आपको मिलती है। और अब हम यूजुअली प्रोग्रामिंग कोर्स जो लिखते हैं वो आईडी इन्वायरमेंट में ही लिखते हैं। जब भी आप कोई चेंज करें, यू नीड टू कंपाइल द प्रोग्राम अगेन, compile, and then compilation is going on, compile and run. It takes some time after compilation. Okay, 34. The number is not divisible by 5. आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। एनवायरनमेंट देख लिया आपने, आपने सारी चीज़ें देख ली, किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरह एरर्स रिमूव करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, रन कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। ठीक है, सेव करके प्रोग्राम आपका आपकी ड्राइव पे जाएगा और उसमें CPP के एब्रीवेशन के साथ ये सेव होगा। ये देखिए, फाइल नेम डिविजिबल बाय 5 डॉट CPP, evenor डॉट CPP, एक्सटेंशन इसका होगा CPP। C++ के प्रोग्राम हैं तो इसका एक्सटेंशन CPP होगा। और जब आप ओपन करेंगे फाइल तो यही वाली फाइल देखिए, मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको हर एक की 2 फाइल्स मिलेंगी, ये एवरेज। लेकिन जो CPP का एब्रीवेशन के साथ, सॉरी एक्सटेंशन के साथ होगा, वही फाइल आपने ओपन करनी है। I hope it would be clear to you all. और remaining next statements जो है वो इंशाल्लाह we'll do in the class. And if you have any question, any query, you can ask me question in the class. Thank you.